तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः। कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्थ 48वां अध्याय। हम कल देख रहे थे अर्थ संकट को त्याग करो। दोनों अर्थ में अर्थ को त्याग करो। एक तो मूल्य के रूप में अर्थ और एक तो उसका शब्दार्थ के रूप में अर्थ। कैसे भी अर्थ हो वह एक संकट है, उसको त्याग करो। और पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। आत्मा प्रसन्न कर लेना, स्वयं अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का प्रसन्नता को लाना चाहिए। जो पुरुषार्थ है उसी के ऊपर हम विचार कल कर रहे थे। पुरुष कौन है? जो अंदर पूर्व में जो रह रहा है, पुरुष में निवास करने वाला, सोने वाला, उसको कहा गया पुरुष। तो जीवात्मा को यहाँ पुरुष के रूप में लिया गया। और ये जीवात्मा ही कर्म करता है। कर्म कैसे कैसे करता है उसके ऊपर कल विचार कर रहे थे। जो जीवात्मा है उसका सूक्ष्म शरीर, आतिवाहिक शरीर अथवा जीवात्मा इत्यादि नाम से हम जिसको बोलते हैं वही सचमुच करता है। वो कैसे काम को करता है, कार्य को संपादन कैसे करता है, उसको कल देख रहे थे। आज भी
इसके ऊपर हम विचार करेंगे कि कर्म किसको कहते हैं और कर्म करने वाला कौन है, कैसे कर्म करता है और क्यों करता है, कहाँ करता है, कब करता है, किसके माध्यम से किया जाता है, उसका परिणाम क्या होता है। और अगर पुरुष करता है कर्म तो वो किसके लिए करता है, ये सारे चीज़ देखने लायक है विचार करके। अगर करता है दो किस्म से हो सकता है, अपने लिए करेगा अथवा दूसरों के लिए। वो दूसरों के लिए जो करेगा वो अपने नज़दीक नाताओं के लिए, नाता रिश्ता के लिए, अथवा जिसके साथ कोई नाता रिश्ता नहीं है उनके लिए भी कर सकता है। तो इसी प्रकार स्वार्थ, परार्थ, पुरुषार्थ इत्यादि इत्यादि बहुत शब्दों को हम सुनते हैं, उनका अर्थ को समझना चाहिए। चलो, कर्ता कौन है, ये सूक्ष्म जीव जो है, जो जीवात्मा के नाम से कहा गया, तो वो कर्म करता है। उसका गठन कैसा है, वो क्या एक है, नहीं, वो तो एक समूह है। समूह को कैसे कहते हैं हम, पांच तो तन्मात्रा और अहंकार, मन, प्राण, ये सारा मिल करके तीनों को मिला कर, अथवा मन और अहंकार को एक ही अगर लोगे तो प्राण और शरीर को ले लो, शरीर इंद्रियों के साथ। ऐसे ही ये तीन और ये पांच तन्मात्रा, जो पांच ज्ञानेंद्रियों का निशानी है। इस प्रकार ये 8 चीज को इकट्ठा करके, जिसमें मन का चतुर्विध मन का स्थिति है, अंतःकरण चतुर्विध। इसी प्रकार ये सारा एक ग्रुप, इसको कहा गया कभी भूतग्राम, कभी कहा गया इंद्रिय ग्राम, कभी कहा गया प्राण का आवास तो प्राणी, कभी कहा गया देह होने से देही, ये अनेक नाम से कहा गया, जैसे भी हुआ। लेकिन कर्म करता है ये अंदर वाला जो सूक्ष्म शरीर, वो सबको प्रेरणा देता है, शरीर को, सबको मतलब शरीर को। और उसमें प्रेरणा का स्रोत तो है प्राण। प्राण मतलब ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां और ये सब को एक चेष्टा प्रदान करता है, जिससे हम कर्म करते हैं करके देखा जाता है, यानी तक माना जाता है। और ये कर्म क्या है, ये जो है मन हो या वाणी हो अथवा इंद्रियों के द्वारा, शरीर का इंद्रियों के द्वारा जो 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 विषमता पैदा होता है, विषमता मतलब स्थिरता में विषमता, स्थिरता में अस्थिरता पैदा होना, मतलब चलनशीलता, चलना फिरना, हिलना डुलना, इसी को कहते हैं कर्म। कर्म किया जाता है, सब मिलजुल के कर्म करते हैं, अकेला कोई एक नहीं कर सकता है कर्म। अगर प्राण अकेला होगा वो कर्म नहीं कर सकता है। प्राण फिर मन का साथ लेना पड़ेगा, बुद्धि को साथ लेना पड़ेगा, अहंकार भी रहेगा, इंद्रियों का जरूरत है जो कर्म करेंगे, और उसके साथ साथ फिर
ये जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सब मिल कर के इकट्ठा किस परिवर्तनशील एक कोई हलचल को, हिलना डुलना, एक स्थिति जो स्थिरता को अस्थिर करने में लगते हैं, उसी को ये इंजाम देते हैं, ये सब मिल करके। और ये कर्म भी इसीलिए कहा गया मानसिक, वाचिक और शारीरिक इंद्रियगत, ये 3 किस्म से हम कर्म को करते हैं। कौन हम? मतलब वो सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा कर्म को करता है, इंद्रियों को संचालन करता है। इंद्रियों का संचालन करने के लिए प्राण का जरूरी है। प्राण का एक मोमेंटम दिया जाता है, प्राण से एक धक्का दिया जाता है जिससे अस्थिरता पैदा होता है। और इसी प्रकार कर्म क्या करता है? कौन? जीवात्मा कर्म करता है। लेकिन कर्म होते वक्त भी अगर कर्म हुआ, कर्म का मतलब हिलना डुलना, बदलाव आना अथवा चलनशीलता को पैदा करना, और वो ऊर्जा का काम, इसी को कहते हैं कर्म। अच्छा, ये जो कर्म हो रहा है, इसके लिए भी खाली ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसका सूक्ष्मात्मा, जीवात्मा शरीर और मन को लेकर के कुछ कर्म कर रहा है, वो अकेला भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए अधिष्ठान एक जगह चाहिए, एक पेंडल, एक मंच चाहिए, जिस मंच के ऊपर वो कर्म को किया जाएगा। जैसे कोई नाटक अगर क्या प्रदर्शित है तो वो कोई एक रंगमंच के ऊपर ही जरूर होगा। मतलब आधार चाहिए जिसके ऊपर ये आधार रख करके स्थापित होगा, कर्म किया जाएगा। इसलिए अधिष्ठान, कर्ता, कोई करने वाला, कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हाँ मैं क्या हूँ। वो मैं वाला अहंकार जो वो है कर्ता। और करण वो करेगा कैसे? जो क्रिया होगा वो क्रिया भी एक चलनशीलता का तो नाम है, उसी का नाम तो कर्म है। तो वो जो चलनशीलता है उसके लिए नाना किस्म के सहायता की जरूरत पड़ता है। कर्म करने वाला एक है और वो कर्म को कराने वाला माध्यम और सहायता बहुत सारे चाहिए। इसीलिए पृथक अनेक किस्म के कारण चाहिए। कारण सहायक कारण, उसको कारण कहेंगे, जो करवाते हैं। और फिर नाना किस्म का चेष्टा, धक्का मुक्के लगेगा तभी तो हिलेगा डुलेगा। पत्थर तो एक जगह पर पड़ा हुआ बड़ा भारी पत्थर, तो उसको स्थानांतरित करने के लिए हमको रंबा चाहिए, बड़े बड़े बांस या बड़े लकड़ी चाहिए, और उसमें कितने लोग चाहिए। उस तरफ से धक्का मारो, इस तरफ से धक्का मारो, तब फिर उसको पलटाओ। कितना क्या क्या चाहिए, विविध चेष्टा
अनेक किस्म के, अनेक दिशा से, अनेक प्रकार के चेष्टा का जरूरत होता है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, ये सब होने के बाद दैव जो है, अनुकूल परिस्थितियाँ जो कंट्रोलर है, ऑल ओवर कंट्रोलर, उसका परमिशन के लिए क्या हुआ, एनओसी, एनओसी के बिना वो कर्म नहीं हो सकता है, उसका आज्ञा अवश्य चाहिए। इसी प्रकार ये सारा मिल जैसे एक कर्म होगा, और करने वाला कौन है, कर्ता। यहाँ कर्ता तो जीवात्मा है, और बाकी सब एक एक करके आप समझ जाओ। मंच कहाँ है, और सब विविध कारण सब कौन कौन हो जाते हैं, ऐसा सारे अगर विचार करेंगे बहुत बारीकी से, तो सारी दुनिया सब इकट्ठा हो जाने से एक कर्म का अनुष्ठान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इस प्रकार सारा दुनिया एक है, गोल है, दुनिया गोल है, सब एक है। इस प्रकार कर्म होगा। For us to be able to sit here and listen to you, everybody, entire universe has helped us or is working towards it. Pardon? For us to be able to sit here and listen to you, The whole world is helping you. Whole universe is helping you. Or else you cannot sit here. by our own will. You are sitting without movement means the forces from all sides, they are acting against each other properly, balancedly. That's how you are sitting. Or else you will fly up or sink down, or you will be flown here and there. So many forces are working. The sun is attracting you. The moon is dragging you. The Mars also is pulling you. The Jupiter is pushing you. And all the stars, they are acting against each other in every direction. And the earth also is pulling you and pushing you, dragging you and pushing you forward. Always so many forces are acting, centripetal, centrifugal, and the third, diagonal. So many forces are acting without your knowledge. So when all of them, they will agree to each other, then only you will be able to do something. Do something means either you can keep quiet or you can move. Both. Only two things you can do. Either you can move or you can keep quiet. For this, from every atom, NOC is required. No objection certificate. Or else you cannot do anything. This is how one must understand and accept the truth. Or else you are nowhere, you cannot do anything. This is supported by almost all the religion, almost all the scriptures. By every way, they tell this only. You are not alone. You are dependent. You are supported by the whole world, or else you cannot
live like this as you are living. So, karma जो है, how the karma is done, action is done by the indweller, the individual self, and which we know subtle being, and supported by the whole body, all the senses and everything, mind, intellect, etc., they get together and get the support from the whole universe, and then there is some movement. This movement is known as action. Movement means imbalanced state of the balanced state. That is known as action. And individual does all this by the whole body, whole group together, because everything is, everybody in this whole group, everybody has to cooperate. The senses, the mind, the intellect, ego, prana and body, everywhere, everybody has to cooperate. Then only some action is possible, some movement is possible. In this way, the individual being as a whole total being does actions by mind, mentally, subtle way, in a subtle way, and little gross way, that is verbally, by speech, and by gross way, by physical body or senses. In three ways one does the actions, and every action will have reaction. Reaction, the same action becomes reaction in the course of changing phenomena. That same action, when goes on changing and modifying and transforming, then same action becomes the reaction. Just as the same seed what I have put on the ground, sown in the ground, that in the course of time, in the course of changes, continuous changes, that seed becomes a plant, and then flowers and fruits, and again it multiplies to be many seeds. This is the world process. So, the reaction, the result of your sowing seed results in multiplying it. Same thing multiplies. That is the reaction. Action and reaction. In between, because of changing phenomena, everything has to come and help. Time, space, conditions, surroundings, so everything together. Nature is taken as the fifth. Fifth means the surroundings, the conditions, they should be favorable. Then only an action is possible to be done. So, now we saw how the action is done. Purusartha. Again we have to go to some other details. This action is not done by the individual being by his free will. No, he is dependent in every sense.
Dependent in what sense? In every sense. Means karma, we have decided, we have discussed it many times. Karma is of three kinds. Whatever is being done now, that is kriyamana, kriyamana, whatever is being done now by all these methods by the individual doer. He has to say, I am the doer. Then only the work is done by him, and it is whatever is being done now. With all these whatever now we have discussed, means by the help of the whole world. And the nature also, the most important part of the role of this action. It should be favorable and it should be agreeable. Then only the action will be done. Now it is at present, whatever is being done, but we have, as an worldly being, we have past and future, and we have many lives before. We have been traveling repeatedly in a cycle of birth and death since a time immemorial. Nobody knows where from we have started. So whatever is done in the past, that has got also effect, that has got influence over the present. Past has got the influence over the present. Present is made out of the past. And future is made out of the present and past. So they are related, the same changing phenomena. One is related with, one is dependent with other, on other. So in this way, now the present life is dependent, is the consequence of our old lives. And whatever karma we have done in the past, that is, nothing is lost, nothing is destroyed, everything is, they are collectively deposited in a subtle way in seed form, that is called chitta. Innumerable lives, impressions are there, nothing is lost. So, they have also influence over the present life. That to say, because of its prompting, because of its urge to multiply, that urge takes projected out and takes the form of a body, and then that is called prarabdha, that is fructified in this body. That means the past has been projected, not all the past, a portion, according to the NOC of the nature. We have permission of nature. That means according to the nature of the amount of seeds, whatever is taken for activating, that amount, its nature is considered, and accordingly a body is given to him.
that amount, body means a instrument through which it will be fructified and it will be multiplied. That's how prarabdha is known. Prarabdha means a portion of your own old solidified or seed form actions, whatever is taken from the past for the present. So it has got tremendous influence over the present life. You are not free, you are not independent. That has got so much impact over the present life. So, present actions are influenced by that prarabdha. And again, see how complicated it is. It has got many kinds of actions, whatever was deposited in subtle impression forms that has been brought forth, and it has got a mixture of so many kinds of actions, and of course good and bad, both. So when good actions, old good actions are projected out to give you a momentum to go ahead, that will impress you, force you to do something good. And if the bad person will come now by the rotation, by the will of the nature, if the bad portion of that momentum comes forward to give you a push, then you will be forced to do something bad. That is called due to prarabdha. Good and bad both we are forced to do because of the force of prarabdha karma, because of your projected plan or scheme, you are forced to do something. Just as the students are forced in a particular class to undergo a particular scheme of education. They have scheme, they have plan, everything by the education department, and it is planned for every particular class, for every particular time, semester or year, or a period of 2-3 years. It is planned already. So the students cannot alter it, they cannot go against it. They cannot. They are bound to follow the scheme. Same way, we are forced to depend upon the force of prarabdha. And still, another point we have to see. Then there is the question, have we no freedom at all to do anything? So, just as the boat is driven away by the terrific wind, it has got no free will to go in a particular direction. It has to be driven away by the wind only. Is the person, is the doer similarly completely
dependent upon the prarabdha? No. No. That's how gahana karma gati. That's how karma, the wage of karma is so complicated. So many facts and figures we have to consider. See, we are always talking of nature. Nature is always changing. So whatever was there in the past, in our past lives, is it same at present? Never it can be. So the nature also changing. Every moment it is changing. So now that old scheme is going to be activated at present natural state. So it has, the present nature has its influence over that also. And that's how the persons, they cultivate their own habits from childhood itself because of the old sanskaras and present situation and their association with what surroundings he is put up. That is also considered. Sansargaja dosaguna bhavanti. By the association we get influenced every moment. If you sit near a fire, yes, naturally you will feel hot. If you use some snow piece, naturally you will feel cold. So the association has also so much influence over you. That's how always it is said, good association should not be abundant. Every moment one should have good association. Satsang. Satsang is a must. It should be continuous. Then only you will be saved. तो अब इसी प्रकार जब हम ये सारा सोच रहे हैं तो वर्तमान का जो परिस्थिति, पारिपार्श्विक परिस्थिति, मतलब प्रकृति का वर्तमान स्वरूप, पूर्व संचित जो पूर्व लाया हुआ प्रारब्ध कर्म के ऊपर भी तो प्रभाव डालेगा या नहीं। और उसी को मिला करके हम बचपन से जन्म के बाद से लेकर के थोड़ा होश हवास होने तक हम उसी से प्रभावित हो करके हमारा एक आदत बना दे करके हमारे एक स्वभाव को पैदा करते हैं। कोई भी बच्चा अपने स्वभाव को बना लेता है इस इतने सारा इकट्ठा हो करके। और उसके साथ साथ आगे जब थोड़ा बहुत उससे प्रभावित हो करके मन उसका थोड़ा प्रौढ़ बन रहा है, मन को परिस्थिति के अनुसार विचार करने के लिए बुद्धि धीरे धीरे काम करने लग जाता है, तो फिर अपना भी उसके ऊपर लेन देन है। प्रारब्ध, वर्तमान परिस्थिति और अपना जो स्वभाव से जो स्वभाव अभी बन गया है, हमारा जो एक व्यक्तित्व बन गया है, चरित्र बन गया है बच्चे का, वो फिर उसके ऊपर सारे को लेकर के उसमें कुछ जोड़ता है। जो अपना पुरुषार्थ है, मैं वहीं आ रहा, पुरुषार्थ किसको कहते हैं? ये बोल रहा था उसे क्रियमाण में लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए।
अभी पहले तो पूरा पिक्चर तो हम देख लें, उसको कहाँ किसको जोड़ना तोड़ना सब तब पता चलेगा। पहले हमारे सामने वर्ल्ड मैप को रख दो खुला करके, हाँ तब फिर किसके साथ किसका संबंध कहाँ जोड़ना कहाँ तोड़ना देखेंगे। फिर ये सारे वर्ल्ड मैप आई एम putting before you, all these complications, how many sources, how many facts and figures, they get together to build up your present personality. What are you? Where are you? And what do you do? How do you do? And when you say I, then what is that I? How it is made up? That I is a complicated I. It is not singular. I is never a singular number. Now, all these together, Swamiji, when war is there, mass karma, war, cyclone, COVID, that is also very. वही तो मैं कह रहा हूँ, वर्तमान परिस्थिति हर पल में आपके ऊपर प्रभाव डालता है और उसी के अनुसार फिर मान लो तुम्हारा जो तुम्हारे ऊपर परिस्थिति जो प्रभाव डाल रहा है मेरे ऊपर वो नहीं डालेगा। मेरे व्यक्तित्व अलग है, तुम्हारे व्यक्तित्व अलग है। हाँ, अगर तूफान चल रहा है वो आग को जैसे भड़काएगा, बादल को ऐसा नहीं, और पेड़ को ऐसा नहीं, पत्थर को ऐसा नहीं असर करेगा। हाँ, सबका अपना अपना एक स्थिति है। पत्थर को मारेगा तो धक्का हवा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। पेड़ को तो थोड़ा हिलाएगा डुलाएगा, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ कर सकता है। बादल को तो टुकड़े टुकड़े करके कहीं कोई फेंक देगा। धूल को तितर बितर करके क्या नहीं कर देगा बादल, मैं हवा। इसी प्रकार एक चीज का दूसरे के ऊपर असर अलग होगा। इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग wind, tornado, it has got influence over everything. But has it the same influence over different objects? It has different reaction on the trees, on the stones, on the sandy beach, on the water. Everywhere it will have different influence. Why? Because of different constitutions. Constitutions or groups, they have different nature. So everywhere there is action and reaction. You have action on me, I have reaction of it, and you have reaction of my action on you. Both vice versa. This is how the whole world is tied up. And you are allowed to do something. So how difficult it is to decide what is the result of your action. Lord Krishna said, it is complicated. That's all. Too complicated. What did Lord Krishna say? Completed? Still louder. Too complicated. Thank you. Thank you. Too complicated.
No decision can be given. What action has what reaction, nobody can say. It is an automatic process driven by, conducted by the nature in multiple ways, multiple strange, secret ways. Nobody can say anything decisively. So you can have the question, then all these astrologists and our mathematicians, are they wrong? If I have to reply, then I have no reply which is final. It is half wrong, it is half right. The whole world is a mixture of good and bad, right and wrong. So, whatever the astrologers or foretellers say, there is something correct and something is wrong. And when that time comes, that will show what is wrong, what is right. हम कभी बच्चों को पूछते हैं, ये पहाड़ी बच्चे बड़े भारी ज्ञानी होते हैं, किसी को पूछो, अरे तेरा परीक्षा हो गया ना? हाँ, सांझ हो गया। क्या होगा, क्या कैसे लिखा है, क्या रिजल्ट कैसे है? न सांझ वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, टाइम विल टेल इट. How have you done in the exam? What do you expect? Swamiji, time will say. Nothing. तो ये सारे चीज़ों को समझ करके हम जब पुरुषार्थ कह रहे हैं, पुरुषार्थ भी कितने कॉम्प्लिकेटेड, और जो क्रियमाण कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो कुछ हो रहा है सारा क्रियमाण में जाएगा. वर्तमान क्रियमाण है और वर्तमान के प्रभाव से हर पल भविष्य को बना रहा है, भविष्य वर्तमान में मिल रहा है. तो वह भविष्य जो अनसुना अनदेखा था, वो वर्तमान में बदल करके अतीत का परिणाम स्वरूप जो वर्तमान है, उसके द्वारा भविष्य मिल करके एक परिस्थिति को पैदा करता है. इसी प्रकार वर्तमान भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें देश काल परिस्थिति, अपना प्रारब्ध, अपना जो हम सोच रखें भविष्य के लिए, वो सोच भी ऐसा नहीं होता है. तुम जो सोचोगे मैं ऐसा भविष्य के लिए नहीं सोचूंगा. एक इंजीनियर जैसे भविष्य के लिए सोचेगा, एक आर्टिस्ट कभी ऐसा भविष्य के लिए नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो वहाँ काम करता है. Just as an engineer will think for the future, the artist will not think in the same way, because the present personality has the way of thinking for the future. So everything is taken into consideration. What are you now? And that's how you will be in future. And what do you think? How do you think? Your thoughts are also influenced by everything in the past, in the present situations, and your personality built in such way. Everything is influenced by each other. इसी को कहते हैं पुरुषार्थ
और अभी हाँ क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी आपने बोला कैरेक्टर भी डिटरमाइन करता है, तो कैरेक्टर अगर ध्यान में या साइलेंट सिटिंग में बैठ रहे हैं मेडिटेशन में, तो उससे कैरेक्टर इम्प्रूव कैसे होता है? मैं तो एक मोटा मोटा धारणा दे रहा हूँ। इसको कहते हैं एशिया, इसको कहते हैं यूरोप। अब उसमें बारीक बारीक यूरोप में कौन सा वो लेबानन कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, हिजबुल्ला कहाँ है, उसको ढूंढो, और कहाँ बम्बार्डिंग हुआ उसको भी ढूंढो। वो ढूंढना पड़ता है भाई, इतना बारीक से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मोटा मोटा थोड़ा बहुत हम विचार कर रहे हैं। इतना हम विचार करने के बाद भी ये डिसिसिव नहीं है। इट इज नॉट रियली वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, दो वी आर गोइंग टू सच डिटेल्स, yet it is not a detailed discussion. All these are just haphazard. Every atom is taken into consider at present, past and future in all conditions. On your action, you are not independent. And that also says, see, not only one atom, see how complicated it is. So many persons you are sitting differently from each other. And now I am here. I am being attracted by everyone from every direction. And that is reacted by my attraction and your reaction. And then all the actions and reactions, attraction and reattractions are balanced, and then only you are sitting there and myself. Or else it will be just havoc. It will be chaos. Something like space, no. Space no. What will happen, nobody knows. If all these are disbalanced, everything is acting against each other. That's how action and reaction. This is the law of, secret of, and power of the nature. That's how the nature is. So, everything is going on in order. This is called harmony in disharmony, freedom in non-freedom, independency in dependency. Both have to work together. Then only there is a situation we can see. This is how Purusartha and Prarabdha. We just say some words, but real picture of Prarabdha and Purusartha, nobody can draw the picture. Nobody. Prarabdha is every moment being influenced by present Purusartha. And Purusartha also, Purusartha means whatever is being done by the individual self according to the situation and time and conditions and his own personality. And before that also, Prarabdha has also a momentum. All these together, they give rise to present action that is known as Purusartha. You have done it. You claim it. I am the doer of this action. And
that is in this way always being influenced by so many things, and somehow it has been balanced and known as some action. Who has done this action? Who is the doer here now? When you see this, and how can he say, I have done this purusarth? Purusarth means whatever is done by the individual being and for the individual being, for the enjoyment of the individual being. First of all, this individual being is not only subtle being which is abiding in the heart, it has got all pervasive dominance over the whole body, and body also is tied up with it. Then body, senses, everything together by the will of this individual indweller, they do some actions which is influenced by your past, your future, your surroundings, and your personality also. This is how the present action is being done, which is known as Purusarth. It is done only for the doer. Now, who is the doer and what he needs to be done? The indweller, the individual cannot, it has got no freedom to have a project or to have a plan. It cannot do anything. Keeping all these in mind or understanding all these situations, we can easily say not only Purusartha and Prarabdha, it is just something to say, to something to have some consolation. Or else it has got no 100% real meaning. 100% if we go, nothing is being done here. Nothing can be done. Neither any action nor any reaction. Some in the big cave of the Himalayan mountains, some cloud has been forced by the tornado and it is going on inside the cave. Nobody knows what is going on. This is how this world is. We have to accept all these facts and figures, whatever I am telling, these are real facts. You go through the science, go through philosophy, go through your own logic, or day-to-day incidents, what we see, go on analyzing, you will get all these. Whatever I am telling, it is not I who can tell something. Am I speaking anything which is not acceptable? It is not acceptable to the ego. Even that ego, again, nothing we can say. So finally, this is called Purusartha, which is not dependent
or independent. It has both dependency. It depends upon so many things, and it has got independency also. So both they go on fighting against each other, and one formula is there. It is subtlemost formula and grossest formula also. Every stone is thrown against the other throne. They react against each other. They break into pieces. How many pieces? What will be the size of the pieces of the stones? That this is how Purusartha and Prarabdha, they act against each other every moment, and the result is taken as the Kriyaman. Will fall in Purushartha. Will. Yes. Yes. Maharaj, relatively the English word will and wish. Will and Wish. Word बोलते ना wish. So they both are the same logically, or they are different? they are same and different also. My answer is always like this. Same because wish becomes will becomes wish, so both are same. But difference is there, they go on changing. One becomes the other. Wish means just some thought. Will means repeated, strong wish. That is called will. But how does the dictionary mean? I don't know. I think like this. Will means strong. Wish means weak. Weak thought is called wish, and strong thought, repeated thought is called will. In grammar also we use I wish so, but I will done. I shall done, I shall do, I will do. There is difference. In force, I shall do, I will do it. I will do, that is emphasized. So now, अभी हमको क्या देखने के लिए मिला? पुरुषार्थ और प्रारब्ध. पुरुष के लिए जो कर्म किया गया उसका पुरुषार्थ क्या कहा? पुरुष जो कर्म को किया अपने लिए उसको पुरुषार्थ कहेंगे, और दूसरों के लिए भी जो किया उसको भी पुरुषार्थ कहेंगे. कैसे कहेंगे? अरे दूसरों के लिए कहा तो किया तो उसको पुरुषार्थ क्यों कहोगे? वो तो अपने लिए नहीं किया. जो निस्वार्थ निष्काम कर्म करते हैं तो उसको भी पुरुषार्थ कहोगे क्या? ना, हाँ कहेंगे. क्यों कहोगे? क्योंकि उसका जो नतीजा है, उसका जो परिणाम है, वो इच्छा नहीं करता हुआ भी उसको मिलेगा. वो तो इच्छा तो नहीं कर रहा है, अगर संकल्प करके इच्छा करके मेरे को फल प्राप्ति होना चाहिए करके करता है तो उसको स्वार्थ कहते हैं, और उसको मिलेगा जितना इच्छा करता है उतना मिलेगा. और अगर इच्छा किए बिना, कोई संकल्प किए बिना, आशा रखे बिना अगर कुछ कर रहा है तो वो तो खुद तो किया ना, किया है तो उसको फल तो अवश्य मिलेगा, बल्कि ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा.
जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, और जिसको कुछ चाहिए उसको उतना ही मिलता है। इसीलिए जो पुरुषार्थ कहा गया वो निष्काम कर्म को भी पुरुषार्थ कहा जाएगा, उसके लिए तो है। इसीलिए ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि वो तो निष्काम कर रहा है तो पुरुषार्थ कैसे कहोगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति इंडिविजुअल बीइंग व्हाट एवर ही डज it has whatever result it has, it is called for the individual being. That's why it is called Purusha Artha. Individual means Purush, Artha means ke liye, for. So whatever is done, it is for the individual being, and it is not independent of itself. It is influenced by past, present, future, situations, time, space, conditions, and nature, and so many things. So always everything is acting and reacting against each other, and then the result is taken out. In this way, it should be directed towards the non-doing situation, position. That is called क्या कह रहा है अभी? वो कह रहा है प्रसन्नता. That is called bliss. It should be all whatever is being done by the individual, it should be always directed. It should have the aim and object towards the bliss, which is the state of equilibrium, which is the state of non-doing. All the doings, all the actions should be motivated, should be directed towards non-doing. Non-doing means ever rest. That is called samadhi, that is called bliss, that is called peace, that is called liberation, that is called knowledge, and that is called absolute equilibrium where everything is silent. That should be the aim, and that should be the direction on which all your efforts, whatever you do, should be motivated, should be directed towards it. And that is called self-help. Or else it can be diverted to any direction. Anywhere it can go. Just as a dust is flown away by the tornado and it dashes against anything and everything, anywhere and everywhere. Vayu mivam bhasi, just as the strong wind takes away the boat in any direction and crushes it, flashes it, pushes it, breaks it into pieces anywhere. So the person will be destroyed by the force of kamayesa, krodhayesa, rajoguna samadbhava, by the force of
negative qualities which are so turbulent, so strong. They are also hiding somewhere inside you to take a chance, to get a chance to bounce upon you and do their job. How difficult it is, this world. So why not keeping quiet? Are you ready to face all these problems? यह है पुरुषार्थ और इसको कहते हैं स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए, आत्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए. यू मस्ट गिव दिस इंडिविजुअल सेल्फ रेस्ट, let it rest. It is ever engaged and it is so badly, restlessly moving hither and thither, and it is never at rest. Individual body means altogether the whole group, with mind, intellect, ego, prana, senses, body, everything. Nothing is stable. Everything is moving every moment. Poor fellow goes to take rest at night. Of course, the body is little calm. Mind, yes, it has come down, taking rest. But what about the prana? What about the whole body system? Are they resting? Nothing is at rest. It is just like the big factories where all those machines, they go on working 24 hours. They never rest. But the workers, they come in turn by turn, but the machine is going on all the 24 hours. It never rests. Similarly, the body is working 24 hours, but the workers' mind group and sense group, and they rest for some time and they come turn by turn. If we could see our past, Eh? if we could see our past, would it help or doesn't make any sense? Or will the situation be the same for the individual who thinks he's an individual? You want to find out your path. Is it? See, past, like, previous lives. Huh? if I knew I had made every time this mistake, but I don't know. Now, what is the real question? You want to find out a particular track where you should. Past. Past. Oh, the path. Past. The past is past, so it is fixed. It cannot change. Past is already past, so it is what it was. It is not changed. But a portion of it or the whole amount has a momentum to push you forward, because the whole past gives rise to the present. So, whether you want to know it, if you don't know, that has no matter.
but it has a momentum which gives rise to the present. That is how we call it prarabdha. But prarabdha, the past is such a big amount, such a Himalayan range mountain. Everything cannot give rise to such a small life. Crores and billions of lives we have passed. There is no account of it. Where from you have started? Who knows? So we cannot talk upon anything of the past. But this much is sure that past has a force on the present. So naturally we imagine who has seen that prarabdha which has brought to you for the present life. Who sees? The very, very subtle seers, and who is called such seers? One who has got all-round vision. When the mind becomes one with the Absolute, then only you can see everything together, and somehow or other, when you come down to mental state, intuitively you can say something which may be right or wrong. But at that state, no expression is possible. But seeing is possible. That is called all-round vision, because it is everything. When you become one with the everything, then you see everything, know everything, you have everything. But when you express, that becomes limited. And who will say that prarabdha, this prarabdha? But sometimes these great yogis, intuitionally or by force of nature, they do something which we think they are the knowers of past, present, future. Past, present, future will be known only when the mind is steady. And when, that means one is one with the Absolute. And when it moves, that means it comes to the mental level, then it is not that, so it is something else. Mind is nothing but the expression of the Absolute. Expression is a process and it is not 100% correct. 100% is not there. Yogis, great jnanis, they are forced by the nature. Sometimes they do something, and that we call it miracle or all-knowing, sarvajnata. All these we say. But their situation is, it has to be one with it. This is the formula. To see everything, you have to be everything, or else you cannot see. तो अभी हम ये कह दिए, आज तो इसको किसी भी हालत में हम समझ गए। भद्र समस्त संकल्प विकल्पों का, विकारों का और अर्थ संकटों का परित्याग कर अपने ही पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। इसको सारे पूरा ढंग से हम विचार करके अगर देखेंगे,
पुरुषार्थ के द्वारा मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चुप हो जाओ, सरेंडर कर दो। पुरुषार्थ करके तुम्हारे पास कोई स्वतंत्र एक डिवाइस नहीं जिसके द्वारा तुम कुछ कर दोगे। अच्छा, तो प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध भी नहीं, सब मिक्स अप, खिचड़ी, सब खिचड़ी पक रहा है इधर। हम किसी चीज को स्वतंत्र रूप से बिल्कुल शुद्ध पवित्र भाव से इस दुनिया में, ना इसे मन से, ना इसे बुद्धि से, ना इसे शरीर से, कान से कुछ नहीं कर सकते हैं। शुद्ध पवित्र डिसीजन कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब खिचड़ी है। अभी जो विचार किए हम, देखो कितने भी एक दूसरे से डिपेंडेंट है जी। स्वामी जी, अभी आज इंग्लिश में चालू था, फिर भी मेरे को जो समझा कि अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो अभी वो बोल रहे आत्मा को प्रसन्न रखना, खुश रखना। तो आप कुछ ही कर नहीं रहे हो, अपने आप हो रहा है, तो फिर खुश रहोगे ही ना आत्मा। तो कुछ नहीं करना तो वही तो प्रसन्न होना। यार इतना नहीं समझे। वही मैं इसमें अरे इसी के लिए तो मैं रोजाना सिर फोड़ रहा हूँ, कुछ मत करो। आत्मा को प्रसन्न करना, आत्मा को प्रसन्न करना मतलब आत्मा चुप आराम करे। तुम प्रसन्न कब होगे? जब सो जाओगे तो तभी तो प्रसन्न होगा। तुमको अगर कहीं हल जोतेंगे या कुछ काम करें कराने के लिए देंगे, कहेंगे पत्थर फाड़ो, लकड़ी फाड़ो, तुम प्रसन्न होगे क्या? तुमको कुछ काम दे दूंगा तो तुम प्रसन्न हो गए क्या? और तुमको अगर कहूँगा बैठो भाई, आराम से बैठो, ठंडा पियो, गरम पियो, तभी तो प्रसन्न हो गए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रसन्न करना मतलब चुप बैठना, कुछ नहीं करना। ये नष्कर्म सिद्धि ये है आखिर, कुछ नहीं करना है। स्वामी जी, फिर वो जो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और ये सारी कृपाएं जो पुरुषार्थ करने के लिए हमें मजबूर करती हैं, तो ये किस लिए पुरुषार्थ है? सारा समझने की कोशिश। क्या? ये गुरु कृपा पुरुषार्थ जो करते हैं हम, शास्त्र कृपा जो कहते हैं और स्वयं पे आत्म कृपा भी कहते हैं, ये सारी किस लिए मतलब कि हम समझने की। मैं समझाने, आप पूछ क्या रहे हो? जैसे ये शास्त्र है, शास्त्र पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं ईश्वर को, कि ईश्वर करो ऐसा होगा, ऐसा करो, होगा, पूछ क्या रहे हो? वही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। सवाल क्या है? सवाल यही है कि ये जब बुद्धि से परे है, समझ में आ नहीं सकता ये। हाँ तो चुप बैठो। चुप नहीं बैठे तो यही करो। और सवाल कहाँ है? अरे जब समझने के लिए कोशिश करो, करो, मिल गया, कुछ समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो छोड़ दो, चुप हो जाओ। और सवाल कहाँ आता है? चुप तो हुआ नहीं आता, नहीं आता है तो फिर यही करो, चुप होने के लिए कोशिश करो। यही तो है। जो नहीं कर सकते उसी को करो। जी। Whereas the word expression logically denotes both outward and inward. Yes, both. Expression is outward movement from inward. And what is outward, what is inward, there is no correct definition. Because there is a demarcating line in between. Innermost, it has got no meaning. And outermost, it has got also no meaning. भाई यहाँ जो कर रहे हो वही करो, नहीं कर पा रहे तो चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रह सकते
तो फिर करो। क्या करूं? जो कर रहे हो वही करो। और क्या चाहिए तुमको बताऊं? सवाल कहाँ उठ रहा? क्या क्या क्या? स्लीपिंग पिल्स चाहिए इसको। अरे विधाता, अरे भाइयों भाइयों बहनों, जो कर रहे हो वही करो। इसी से समझो कि ये सब फालतू, क्योंकि चुप नहीं बैठ सकता हूं। इतना समझो कि जो कर रहे हो सब बेकार, तुम्हारी जिंदगी ही बेकार, तुम्हारे होना बेकार, तुम्हारे नहीं होना बेकार, तुम ही बेकार, तुम्हारे जो सब बेकार है। तुम कुछ नहीं, कहीं नहीं, तुम कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो। इतना समझने के लिए सिर फोड़ो जैसे फोड़ रहे हो अभी। मारो छलांग। जब समझ में नहीं आ रहा तो सिर फोड़ो, यही तो कर रहे हैं हम। इतना बोलने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? है व्हाट टू डू? डू नथिंग? नो, आई कैनॉट डू नथिंग, सो डू समथिंग। What else to tell? And what to do? Whatever you are doing, do it. And this is the essence of all the scriptures. Don't change your track, go on with it. Don't be bothered. Don't have any botheration. Go on. Go on. चल, लगे रहो इंडिया, लगे रहो इंडिया, बॉलिंग करते जाओ। छक्का मार दिया तो क्या हुआ? उसके बाद चौका मार दिया। अरे 2-3 छक्का मारने के बाद फिर पकड़ा जाएगा, क्या चाहो करते जाओ। उसी जगह पर बॉलिंग करते जाओ, चेंज नहीं करना। क्यों? कि चेंज तो वहां है। चेंज वो जैसे एक जैसे हमेशा बैट नहीं घुमा सकता है, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। लगे रहो इंडिया। हमेशा नया नया मैच खेलना ही पड़ता है ना। तेरी के खेलो, मना नहीं, वो भी मना नहीं। कभी सिर को पत्थर में फाड़ो, कभी सिर को सिलवटा में फाड़ो, कभी सिर को वो हथौड़ा लेकर मारो। और क्या करोगे? मैं भाई जितना मैं समझ सकता हूँ, जो समझाऊं उसको तुमको बोल रहा हूँ। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये जो कुछ हम शास्त्र अध्ययन करते हैं और जो कुछ विचार करते हैं, खोल करके बार बार हल्ला करके यही कहते हैं कि भाई ये सारे किसी काम के नहीं, छोड़ दो इसको, दुनियादारी छोड़ दो। दुनिया में तुम कुछ भी करोगे, उसका जो परिणाम होगा दुखदाई होगी। दुखालयम अशाश्वतम। सारा दुनिया, क्या तुम ये दुनिया से ऊपर जाकर के शास्त्र अध्ययन कर रहे हो? हैं? आसमान के ऊपर बैठ गए के शास्त्र अध्ययन कर रहे हो क्या? बस तो इसीलिए कहा भाई सत्संग करते चलो, कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा।
मन तो चुप तो हो ही जाएगा कभी, कब तक करेगा। सत्संग करते रहो, सिर फोड़ फोड़ के चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, सबके जड़ में है सत्संग। सत्संग को कभी एक पल के लिए नहीं छोड़ना, इसमें कभी ना कभी मन शांत हो जाएगा। कितने बार ये सवाल का जवाब मिलेगा? हाउ मेनी टाइम्स you want to know your answer? Go on repeating it again and again. शास्त्र, गुरुवाक्य, संतों का चरित्र और परोपकार, इसको करते चलो, कभी ना कभी एक समय आएगा सबसे छुटकारा मिल जाएगा। धीरज रखो, चलते रहो, यही हमारा काम है। आज नहीं तो कल से ही। दिस इज द वे, व्हाटएवर यू आर डूइंग, गो ऑन डूइंग इट। जी चलो भाई, कल देखेंगे फिर। कल क्या देखेंगे? पुरुषार्थ देख लिए और अर्थ संकट क्या होता है देखें, संकल्प विकल्प को पहचाने, और क्या है पुरुषार्थ किसको कहते हैं, प्रारब्ध कैसा, कर्म का स्वरूप को हम थोड़ा बहुत देखें, इतना तो कुछ नहीं। इसके ऊपर अगर डिटेल में जाएंगे हम तो और 8-10 दिन बैठ करके इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। कर्म का हर तरफ से हर पहलू को देखना चाहिए, कैसे कर्म होता है और उसमें करने वाला कौन, कराने वाला कौन। फिर कल देखेंगे हम जिसमें मन रूप पिशाच घूम रहा है, काम क्रोध रूप काले मेघों से जो सदा व्याकुल रहता है, ऐसे संसार रात्रि के घने अंधकार में अपना आत्मा ही पूर्ण चंद्रमा है। उसको देखो, ये काली बादल काली रात में आत्मा कैसे चंद्रमा के यहाँ भी, पूर्ण चंद्रमा के यहाँ भी काम करता है, कल देखेंगे। संसार में रहना है, संसार तो जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम अंधेरा में नहीं रहेंगे, थोड़ा उजेला तो करें, एक बत्ती जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। We cannot give up this dark world because we are here. So at least when we are living in this dark night, we can lit a lamp. That much we can do. Tomorrow we shall see how to lit a lamp. Whether it is halogen light or it is a small glowworm, let us see how much you can. हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सबदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय।
जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।